Morning, everybody. Shabbak here. Today, this thing we will look at current liability ratios for various customers. Okay, today is 1st of August 2024. Current liability ratio is used by a lot of owners, a lot of our current clients to know how much of cash they are generating from their operating activities या वैसे भी cash कितना आ रहा है to meet their current liability requirements. मोटा मोटी it's a very simple. Don't go by 0.2, 0.3. वो सब नहीं करना. But हमें basically we have to understand the idea behind it. बस idea क्या है, ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि मैं आपको एक सिंपल तरीके से ये बताता हूं कि देखिए ये आपका मैंने ट्रायल बैलेंस अक्रॉस अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज किया. Here you go down to current assets and here you look at the bank accounts. तो आप current assets के अंदर you can also look at, okay fine, suppose some besides cash and bank account, suppose you want to include something in the immediate cash balance also, तो वो भी आपको ऑप्शन है. अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप इसको थोड़ा सा इधर लिख लीजिएगा, सॉरी माफ करिएगा, मैंने इसको बढ़ाया और ये देखिए कि इसका ओपनिंग बैलेंस इतना था, आउटवर्ड मूवमेंट इतना था, but net movement is about 50 lakhs. So he has added 50 lakhs in this particular time frame. जिस टाइम के लिए हम लोगों ने उसकी we have analyzed it, right? बट अगर हम इसकी उसकी कॉपी देख लेते हैं, ये जो डुप्लीकेट है, तो इसमें एक एनालिस्ट की बहुत जरूरत पड़ती है. मतलब आप ऐसे मत करिए कि भैया 1 मिनट में मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इट वोंट हैपन, right? Because ratios and party and all has to be looked up in detail before you make it, because this is matters worth crores. So we have hidden the client name, we have hidden everything. But if you look at this particular company's name, and I'm looking at it by the trial balance, then this thing is about 33 crores. ठीक है ना, 31 crores. तो ये जो है कैश प्रॉब्ली इनका उतना बना नहीं रहा है जो कि करंट उसकी कंपनी से. देन यू हैव टू गो डाउन हियर एंड सी दैट भाई कैश आउटफ्लो फ्रॉम द हिस्टोरिकल कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना है. इफ यू आर लुकिंग एट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो फिर आपको पार्टी लेजर नेम जिसको कि कैश दिया गया था उसकी हायरार्की देखनी पड़ेगी. हाउ इन दिस केस मोस्ट ऑफ देम आर ऑपरेशनल, बट सपोज you want to say, okay, fine, that this bank account is HDFC credit. मान लो कि ये current assets ये रहा. And if I look at this ledger particular name, अगर मैं इस ledger को देखता हूँ, ठीक है ना, बैंक अकाउंट पे, तो then I don't want to make it go transfer here, तो वो अलग चीज है. But I might also want to look at, okay, fine, which particular account it goes. तो इसको in depth और detail में समझना पड़ेगा कि how your cash flow over period in time and by document number and document date has moved, right? क्योंकि अगर if your current liabilities are way above what your current cash generation activities is, then that's a red flag, right? तो मतलब cash collection पे करना, then you have to analyze the cash flow statement and look at what we call the sundry debtors. Thank you very much. अगर POC करना है, do get in touch with us. Thank you very much for your time.